गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। आज की हम हमारी मेन स्टोरीज हैं पॉलिटिक्स अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन इशू, और सेकंड इशू है हमारा जियो पॉलिटिक्स अराउंड IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द आर्टिकल दैट वी आर रेफरिंग हियर इज साइमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें जो ऑथर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज एग्जामिनिंग द feasibility of one nation one election or the simultaneous polls of Lok Sabha and state legislative assemblies. So like he examines that there are like problems of conducting simultaneous polls under parliamentary system, because there is the possibility of midterm election scenario when a ruling party in any state loses majority or loses the no confidence motion. So then there starts the scenario of midterm elections. So this scenario can even arise at the center. See, the point here is ऐसा नहीं है कि एक बार में बस simultaneous elections करवा लें and then in future that simultaneous nature doesn't stay. For example, 1950s में our first general elections were simultaneous only, बट एज द इंडियन पॉलिटी मूव्ड फॉरवर्ड, तो ये जो साइमल्टेनियस नेचर है वो रही नहीं, बिकॉज बीच में काफी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अब डिसमिस हो गई थी, या काफी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है फॉल हो गई थी। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीच में सेंटर में भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई थी, जहां पर सेंटर ने अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल जनता गवर्नमेंट एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ VP सिंह, गवर्नमेंट ऑफ चंद्रशेखर देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो इशू है, अगर इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन रखना है लाइक फॉर एवर, तो लाइक दो सिनारियोज आते हैं कि या तो कि भाई जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट जब बन जाती है आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसको कंटिन्यू करने दिया जाए, या जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया जाए। तो जो ऑथर बोल रहा है कि ये जो दोनों ही जो ऑप्शंस हैं, इट विल डिफीट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल। और दूसरा, अगर ऑल्टरनेटिव जो मूट किया जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी फॉलोड बाय कॉन्फिडेंस मोशन, कि अगर कोई ऑल्टरनेट मेजोरिटी बन पा रही है, अगर जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ऑल्टरनेटिवली कोई और गवर्नमेंट बना पा रहे हैं, तो वो करने दिया जाना चाहिए। बट इसमें भी वही इशू आ जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, अगर ऑल्टरनेटिव सिनारियो नहीं बन पाता है, फिर वही इशू ऑफ मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो है सामने आ जाएगा। तो देन ऑथर टॉक्स अबाउट कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन रियलिटी करनी है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लोर की जा सकती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब एक बार मेजोरिटी आ गई, वोटर्स ने डायरेक्टली इलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट, तो वो जो पूरी टर्म है, फुल टर्म के लिए वो जो मेजोरिटी है चेंज नहीं होंगी। जो ये चीज है, दिस इज नॉट द केस विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा। तो जो यहाँ पर जो मेजोरिटी के साथ जो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो मेजोरिटी जो कमांड होती है, वो हमेशा डायनामिक रहती है। वो बीच में जो आपके MLAs या MPs हैं, उनकी सपोर्ट, you can lose their support and the governments can fall. For the sake of political stability or for the sake of making one nation one election reality, this author is suggesting that we have to go for presidential system. And then इसमें कुछ दो issues आ रहे हैं कि in the past it has been stated that parliamentary democracy is part of basic structure. So the author argues that democracy is part of basic structures. It doesn't mean that it has to be in the parliamentary form only. Presidential form can be equally democratic. And then the other issue is that in the diverse countries such as India, a nation being ruled by the authority of one person that is concentrated in president, that would militate against the federal nature of Indian polity. तो यहाँ पे ऑथर देन अगेन इट गिव्स एग्जांपल ऑफ अमेरिका के विच इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग फेडरेशन देन इंडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड मिलिटेट अगेंस्ट फेडरल सिस्टम, बट ही डज से कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट्स बेटर, बिकॉज इसमें जो कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है विच इज वोटेड इनटू पावर बाय लेजिस्लेचर, वो बेटर रिफ्लेक्टिव होएगी ऑफ डाइवर्सिटीज ऑन द ग्राउंड। देन ऑथर क्वेश्चंस के दिस होल स्टेप, जिसमें फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम तक लेके जाना है,
like you have to change the nature of union and state executive, एंड आपको जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड और काफी न्यू आर्टिकल्स ऐड करने पड़ेंगे टू गिव इट रियलिटी। एंड ऑल्टरनेटिवली अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अकोमोडेट करते हैं इसमें, अगर जो वो इश्यू था कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए या मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स को जो है रहने दिया जाए, और अगर टू मेक इट रियलिटी लाइक एट द आउटसेट जो काफी गवर्नमेंट्स को डिसमिस भी करना पड़ेगा टू मेक वन नेशन वन इलेक्शन रियलिटी, तो दिस विल आल्सो नीड फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हमने जो पिछली वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वुड बी नीडेड टू मेक इट हैपन। तो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर पे भी इम्पिंज करता है, तो द अमेंडमेंट प्रोसीजर वुड बी वन ऑफ द लाइक जो हमारे 3 अमेंडमेंट प्रोसीजर्स है उसमें जो टफेस्ट है वो वाला चूज करना पड़ेगा। एंड गिवन द ऑपोजिशन पार्टीज आर नॉट ऑन बोर्ड, तो पार्लियामेंट इटसेल्फ में 2/3 मेजोरिटी गार्नर करना मुश्किल हो जाएगा, एंड देन रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स is another issue. So then the author questions that then when there is no political feasibility, when there is no like constitutional feasibility, and इसकी desirability पे वैसे भी काफी questions हैं, then why the ruling party is bringing this up? So the reason given here is the political in nature. कि अभी like 5 states, 5 like very consequential states are going to polls. Those are Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, and Andhra Pradesh. So author says that BJP doesn't see like very good prospects in these upcoming state elections, and it doesn't want to enter the phase of Lok Sabha elections by losing these elections. So they wish ke like at least these 5 states can be clubbed into the Lok Sabha election, or then the wave around Prime Minister Modi can be built, and maybe they can gain some electoral dividends in these states as well, especially in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. Moving forward, we will come to our next story of today. This is regarding geopolitics around IMEC. तो इसमें हम we will be referring 2 articles. One is an economic corridor, the Israel link and the geopolitics. Israel is the weak link in the India, Middle East, Europe economic corridor plan. And the another article which we will be referring is from Indian Express. And this is not just oil. New momentum in ties between India and Saudi Arabia could be a game changer. तो ये आईएमईसी के कॉन्टेक्स्ट में जो वर्जनिंग सऊदी एंड इंडिया टाइज है उसको डिस्कस किया गया। तो लाइक विल सी बोथ इशू को थ्रेड पे डिस्कस करने से पहले पहले हम जो मैप देख लेते हैं वेस्ट एशिया इंडिया का, एंड आल्सो फ्रॉम वेयर द आईएमईसी कॉरिडोर जिसमें शिपिंग लिंक्स और रेल लिंक्स जो है एनविसाज्ड है वो कहाँ कहाँ से निकलेगी। इट विल गो फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, enter the UAE and it will enter Saudi Arabia as well directly, और यहाँ से it will enter Jordan, and through Jordan it will enter Israel, and then from Israel it will go through Mediterranean Sea to Europe like Italy, Greece and France. तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो बोल रहा है कि like for the success of IMEC, it is very important for the normalization of ties between Saudi Arabia and Israel. Like, if you are acquainted with the history of this region, so you must be knowing that there has been like very bitterness in relations between Israel and Arab states. इनकी आपस में wars भी हुई हैं regarding the Palestine issue. तो जो पैलेस्टीन है लाइक अभी इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, वो मैप्स में दिखाया नहीं जाता, बट द इजराइल द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय इजराइल वाज erstwhile पैलेस्टाइन ओनली, एंड अभी लाइक इनके बीच में लाइक देयर इज कांस्टेंट वॉर बिटवीन द पैलेस्टीनियन पीपल एंड इजरायली पीपल, एंड इजराइल जो है वो जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उस पे अभी भी ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन होने के लिए सऊदी अरेबिया एंड इजराइल की लाइक दे हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ऑन इजराइल पैलेस्टाइन इशू एज वेल। ये तो काफी अभी लाइक इट्स अ कंसेंसस दैट सच अ प्रोजेक्ट एज आईएमईसी विल चेंज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन लाइक फॉर द फ्यूचर, and like all the major powers in the region are betting hugely on it. India would be a great benefiter from it, course, and the other states as well, Arab states as well. So normalization of ties between the Israel, Saudi and Israel would be a precondition, but it would be tough to achieve because the domestic politics of Israel will
sort of prevent from it coming into fruition. बट जो बेंजामिन नेतन्याहू है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, उन्होंने काफी इंथुजियाज्म से सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को, बट इट विल रिमेन टू सीन कि हाउ दिस थिंग विल मूव फॉरवर्ड, द रिलेशन बिटवीन Saudi Arabia and Israel. The US, the President Biden was in this region to push forward this cooperation or this normalization only. So the main issue is that Saudi demands that Israel commits to the two-state solution एंड द वेल बीइंग ऑफ प्लेस्टीनियन पीपल. अभी तक इसराइल जो है लाइक अपना पूरा जियोपॉलिटिकल जो वेट है इट इज उसके ऊपर लगा रहा है कि प्लेस्तीन को रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए. तो द सेकंड आर्टिकल विच इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस में वो सऊदी एंड इंडिया की टाइज को डिस्कस किया जा रहा है. तो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? देयर इज अ recently concluded bilateral visit following G20 summit. The Crown Prince Mohammed bin Salman was in India and had a bilateral meeting with Narendra Modi, and this was the second bilateral meet between the two leaders in the last 4 years. The author is sort of acknowledging that there has been a genuine lift-off in India's foreign relationship with Middle East in the last decade. So the economic ties, किसी भी relation, foreign relation में economic ties ही होती हैं which form the foundation of it, and economic ties between India and Saudi Arabia are robust and they are increasing only. So India is second largest trade partner of Saudi Arabia, and Saudi Arabia is India's fourth largest trade partner. For more than a decade, Saudi was largest supplier of crude to India. एंड इसका जो क्रूड था थोड़ा हायर लाइक हैवियर फॉर्म था, एंड इंडियन रिफाइनरीज वर लाइक मोर suited towards lighter crude from Iraq and Iran. But due to like various developments like disposing of Saddam Hussein and then sanctions on Iran, the imports of lighter form of crude oil sort of diminished, and so India had to like go to Saudi Arabia for the heavier forms of crude oil. And to compensate for this, like Saudi Arabia have invested heavily in Indian refineries so that it can handle its crude oil, the heavier form of crude oil. It has invested around $50 billion, and also like it is planning to invest further $50 billion into India in the form of sovereign wealth fund. So this would be like long term financing which is very beneficial for infrastructure projects. उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए रहती है, एंड इंडिया इज इन द डायर नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर financing because it's on the cusp of major infrastructural push. And the convergence is also due to the Mohammed bin Salman's vision of Saudi Arabia 2030. He envisages Saudi Arabia as post oil economy, and for Saudi Arabia to become post oil economy, India has a very special position because it's a very big economy on its neighborhood, and there is a huge people to people movement as well. Like there are a lot of Indian expatriates in Saudi Arabia in both unskilled and skilled jobs, and India was also instrumental in Saudi Arabia gaining BRICS membership. तो यहाँ पे लाइक नेचुरल जेलिंग है, एंड विद द कमिंग अप ऑफ IMEC, तो जो ये इंटीग्रेशन है विद द अरब वर्ल्ड और विद मिडल ईस्ट, वो इंडिया की और भी ज्यादा कंप्लीट हो जाए. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप today's discussion would have been helpful to you. It added some value to your preparation. Thank you for tuning into India Watch.